Good morning, children. Welcome back to our math class. I am your teacher Aarti Pathak. In the previous class, you know about the addition, and in the class 2, you have already done the addition of 3 digit with and without carryover. Today, I am going to explain you the addition of 4 digit number with carryover. Let's begin our class. Children, just for recall, we already know in addition when two or more numbers are added, each of the numbers to be added is called addends. That means अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं और हम उन्हें ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर्स कहलाते हैं addends. तो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स addends हैं. And the result obtained after addition is called the sum. जो आंसर हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे sum. Now we begin our class with the addition of 4 digit number with carryover. Now see the example number 1. Add 3756 and 2376. दोनों ही 4 digit numbers को हमें प्लस करना है. तो what is our first work? First we are making a place value chart. हमने यहाँ पे 4 digit का place value chart बना दिया, ones, tens, 100 and 1000. Now we are arranging the first number in the place value chart. Children, always remember when we are arranging the numbers, we are always start writing from the ones place. At the ones place it is 6. So 6 under the ones place. यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा स्पेस एक लाइन का ब्लैंक छोड़ना है फॉर द कैरी ओवर. तो 6 को हमें कहाँ अरेंज करना है? 6 अंडर द वंस प्लेस. 5 की प्लेस से टेंस, तो 5 अंडर द टेंस प्लेस. 7 अंडर द हंड्रेड्स प्लेस and 3 under the thousand place. In this way we are going to arrange all the numbers. So हमने पहले वाला number arrange कर दिया. Now we can take this number and arrange it. Again we are going to start arranging from the ones place. 6 under the ones place, 7 under the tens place, 3 under the hundreds place and this 2 under the thousand place. We want to add it, so we simply put a plus sign and make the two lines over here and start adding it. Always start with the step 1. Add the ones place. At the ones place it is 6 and 6. So 6 plus 6 is 12. What is 6 plus 6? 6 plus 6 is 12. Since we cannot write 2 digit at the one place, so what I will write? This is 12 ones. So what I do? This 12, 2 at the place of the ones place. And what about this one? This one is carry over. Clear? This is the addition of ones place. Now step 2. Step 2, add the tens place. Ones place we have done. Now we are going to add the tens place. Start from the 7. 7, then next is 5, and do not forget to add this carryover, that is plus 1. So 7 plus 5 is 12, plus 1 is 13. So our answer is 13 tenths. Since again we got the 2 digit number 13, so this 3 we can write under the tens place, and this 1 is carryover on the लेफ्ट साइड. अब टेंस की लेफ्ट साइड में कौन है? टेंस की लेफ्ट साइड में है हंड्रेड्स प्लेस. तो यहाँ पर ये कैरी ओवर हो जाएगा. 3 हमने लिख दिया टेंस प्लेस पे और इसका 1 हमने कैरी ओवर कर दिया हंड्रेड्स प्लेस पे. सो दिस इज हाउ वी हैव डन वंस एंड टेंस प्लेस एडिशन. नाउ स्टेप नंबर 3. स्टेप 3, एड द हंड्रेड्स. अब हंड्रेड्स प्लेस पे जो नंबर्स हैं हम उनको प्लस करेंगे. स्टार्ट फ्रॉम 3. फर्स्ट राइट 3, देन नेक्स्ट इज 7. डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द कैरी ओवर, दैट इज प्लस 1. नाउ add it. 3 plus 7 is 10. 10 plus 1 is 11. 11, answer is 11 hundreds. Clear? Now again we got the 2 digit. This one we can write as an answer of the hundreds place, and this
next tens place ones is carry over the next place of the hundreds at the left side, that means 1000. So this one is carry over the 1000 place. Now come to the step 4. Step 4, add the thousands. At the thousands place there are 2, next is 3, and do not forget to add this carryover, that is 1. 2 plus 3 5 plus 1 is 6. 6 thousands. So we can write down 6 under the thousands place. We have done the addition. Now it's time for answer. What is the answer of addition? It is sum. So our answer is sum is equal to 6132. And please children, do not forget to place the comma in the answer, always inserting the comma between the two periods. There are two periods. This ones, tens, hundred become a ones period, and this is a thousands period. So between the ones and the thousands period we are placing the comma. So this is our answer. Sum is equal to 6132. I hope you understood how we can do this 4-digit numbers with carryover. Now understand the second question. See the example number 2. Arrange the numbers in column and add. So there are, now we can see this first question. There are 3 different numbers. First we are going to arrange them in the vertical column and then add. First number is a 4-digit number, second is a 3-digit, and third is a 4-digit number. So there are different digits number. Now again we can see how we are going to arrange and then add. Always remember children, we are going to start arranging the numbers from the ones place. अब जब हम इसको अरेंज करना स्टार्ट करेंगे उसके पहले ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हम ब्लैंक छोड़ेंगे फॉर द कैरी ओवर. सो व्हाट इज द प्लेस ऑफ 9? 9 एट द वंस प्लेस. सो 9 को हमने वंस प्लेस पर अरेंज कर दिया. 5 एट द टेंस प्लेस, 8 एट द हंड्रेड्स एंड 4 एट द thousands place. We have arranged the first number. Now we are going to arrange the second number. 3 at the ones place, 2 at the tens place, 6 under the hundreds place. Now there is no thousands place. So what I do? Empty places filled with the 0. हम यहाँ पे हमने 0 fill कर दिया. Now start writing the third number in the place value chart. 0 under the ones place. 3 को हम टेंस प्लेस पर अरेंज कर देंगे, 4 को करेंगे हंड्रेड्स प्लेस के नीचे और 2 को कर देंगे थाउजेंड्स प्लेस के नीचे. आवर क्वेश्चन इज फॉर एडिशन. तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक प्लस साइन पुट करेंगे एंड वी कैन ड्रॉ 2 लाइन्स विद द हेल्प ऑफ रूलर. स्केल की हेल्प से हमने यहाँ 2 लाइन्स ड्रॉ कर ली. देर आर 4 स्टेप्स टू एड इट. स्टेप नंबर 1 इज एड द वंस. अब हम वंस प्लेस को ऐड करते हैं. 9 + 3 + 0 इज 12. अब 12 में हमने 12 वंस में 2 यहाँ लिखा एंड 1 इज कैरी ओवर. अब कैरी ओवर वंस की लेफ्ट साइड में कौन है? टेंस प्लेस. तो हमने यहाँ पर 1 ये कैरी ओवर कर दिया. दिस इज कैरी ओवर. नाउ स्टेप नंबर 2 इज एड द टेंस प्लेस. डू नॉट फॉरगेट टू एड दिस कैरी ओवर. 3 + 2 is 5. 5 + 5 is 10. 10 + 1 is 11. Again we got the 2-digit number. Never ever come 2-digit at the ones place. अब that is answer is 11 tenths. अब उस 11 tenths में 1 we can write down here and 1 is carry over on the next left side. That means at the hundreds place. Now step number 3 is add the hundreds. Add the hundreds means अब हम hundreds place के numbers को plus करेंगे. 4 + 6 is 10. 10 + 8 is 18. 18 + 1 is 19. अब 19 में से हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे? 9 और 1 को क्या कर देंगे? कैरी ओवर. कौन सी प्लेस पर? थाउजेंड्स प्लेस पर. क्लियर? लेफ्ट साइड में कैरी ओवर होगा. अब स्टेप नंबर 4 है एड द थाउजेंड्स. थाउजेंड्स को प्लस कर लेते हैं. 2 + 0 is 2 + 4 is 6 + 1 is 7. So our answer is at the thousandth place 7. Now it's time to write down the answer. What is the answer of addition? It is sum. अब हमने इसका आंसर लिख दिया 7912.
Now it's time to put the comma. Comma कहाँ लगेगा? Between hundreds and thousands period. So this is our answer. Clear? Now understand the example number 3. Our next question is arrange the numbers in column and add 5 thousands plus 9 hundreds plus 2 tens. Our question is given in the form of language 5 thousands. So in the same way we are doing it. First we are making a place value chart. Arrange this 5000, then 900 and then 2 tens and then do addition. So first we are arranging the 5000. So 5 at the thousands place. हमने अरेंज कर दिया 5 को thousands place पे. 5000 लिखना है. So hundreds place 0 हो गई, tens place 0 और ones place भी 0 हो गई. This is 5000. ठीक है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अरेंज 900. 9 को कौन सी प्लेस पर अरेंज करना है? एट द हंड्रेड्स प्लेस. अब कितने जीरोज आते हैं हंड्रेड्स में? 2 जीरोज. तो ये हो गया 900. अब 2 कौन सी प्लेस पर है? टेंस प्लेस पे. हमने 2 को टेंस प्लेस पे अरेंज कर दिया. 2 टेंस, 2 टेंस होता है 20. दैट्स इट. हमने ऑल द नंबर्स वी हैव अरेंज. नाउ मेकिंग 2 लाइन्स विद द हेल्प ऑफ रूलर. स्ट्रेट लाइन्स बनाएंगे एंड पुट अ प्लस साइन. अब simple, we do the addition. Start from the ones place. 0 0 0. Answer is 0. Tens place addition. 0 plus 0 is 0 plus 2 is 2. Hundreds place addition. 0 plus 9 is 9. And the thousand place it is 5. Again it's time for answer. Answer of addition is sum. We are going to write down the answer 5920. Now where we can place the comma? Between the ones and the thousands period. So there is a comma. Simple. One more thing. If we want to write the answer directly, just see how we are going to write. 1000 means this is the highest place. So we are making a place value chart over here directly. 5 at the thousandth place. तो हमने 5 को under the thousand लिख दिया. 9 at the hundreds place. हमने 9 को hundreds पे. 2 at the tens place. Which place is empty? Not given. One's place is not given. So all the empty places filled with the 0. Directly also we are getting the answer in this way, or by expanding we are writing the answer in this way. I hope children you have understood how we are doing the addition of 4-digit number with carryover. Do practice with some other numbers and I will meet you in the next class.